रिजवान हसन और आप देख रहे हैं नशे में न्यूज। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे नौजवान हरदिल अजीज यंग कॉपरेटर वाजिद साहब हैं, जो पिछले साल सितंबर 2020 में उनका टर्म खत्म हुआ। उसके बाद करीब 2 साल हो गए बीबीएमपी इलेक्शन नहीं हुआ, और वाजिद सबसे पहले वो लीडर थे जो कोर्ट में जाकर पिटीशन डाला के बीबीएमपी इलेक्शन करवा। और अभी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ गया है और गवर्नमेंट ने वार्ड रिजर्वेशन की लिस्ट भी सबमिट कर दी है। और कांग्रेस के लीडर और दूसरे दीगर लीडर्स भी नाराज हैं इस वार्ड रिजर्वेशन के बारे में। और अब हम जानते हैं वाजिद से कि सबसे पहले आप हमारे स्टूडियो है, आपको बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम आप हमारे स्टूडियो में। अभी बीबीएमपी इलेक्शन अनाउंस हो गया है, सुप्रीम कोर्ट आ भी गए, आप पेटिशनर थे और आपने केस जीत गया है। इसके बाद जो गवर्नमेंट ने वार्ड रिजर्वेशन दी है 240 पर 4 वार्ड के, उसके बारे में थोड़ा हाईलाइट कीजिए और आप क्यों इससे नाखुश हैं। सबसे पहले तो मैं नशेमन और आपका शुक्रिया अदा करता हूं, आपने मुझे बुलाया यहाँ पर। देखिए, अभी बीबीएमपी का जो टर्म था वो 2020 सितंबर में खत्म हो गया। गवर्नमेंट को इलेक्शन नहीं करवाना था, उन लोग चाहते थे कि बीबीएमपी इलेक्शन ना हो। वजह उन्होंने ये दी कि बीबीएमपी का एक नया एक्ट लाया गया है, बैंगलोर एक्ट 2020, और थोड़ा इंप्रूवमेंट्स किया जाए, बड़े वार्डों को छोटा किया जाए और थोड़े बहुत खरियों को ऐड किया जाए। इस तरह उनका मंसूबा था। वो इलेक्शन के ना कराने के हक में थे। तब हमने हाईकोर्ट में गए, हमने दरवाजा खटखटाया और हाईकोर्ट में हमारे हक में एक ऑर्डर हुआ। वो कब हुआ था? वो दिसंबर 2020 उसके वहां पे हाईकोर्ट ने क्लियर कहा कि इलेक्शंस पोस्टपोन नहीं किया जा सकता, तो यू हैव टू कंडक्ट इलेक्शंस विद इन 6 वीक्स करके एक दे हैव ऑर्डर। तो उस ऑर्डर को लेके गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका सुप्रीम कोर्ट में स्टे लेगी। दे वांटेड टू हाईलाइट के नया एक्ट हुआ है, तो वो एक्ट थोड़ा समझिए, क्या एक्ट लेना चाहते हैं, लेके आना चाहते हैं? नहीं, देखो, बेंगलोर का जो केएमसी एक्ट है, जो बीबीएमपी में केएमसी एक्ट तो पहले से भी है, और पूरे हमारे कर्नाटक स्टेट की जितने भी कॉर्पोरेशन है, इट वर्क्स अंडर केएमसी एक्ट 1976। तो बैंगलोर को सेपरेट एक्ट बनाने की उन्होंने कोशिश की और बनाया गया बैंगलोर एक्ट 2020, उसको जारी किया गया। उसके तहत बैंगलोर एक्ट के तहत इट विल बी 243 वार्ड्स, नॉट लेस देन 243 वार्ड्स करके उन्होंने एक पॉपुलेशन और रेडियस कितना है बेंगलुरु सिटी? सेम रेडियस तो सेम रहा, जितना भी अभी जो पुराना बीबीएमपी है उस हिसाब से ही इन्होंने रखा, और नए 198 को 240 तक ले जाने का, और मेयर का टर्म जो 1 साल का था उसको 2.5 साल करने का मंसूबा ये सब एक्ट में लाया है। और वो साथ में साथ पावर डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, जैसे कि जोनल कमिश्नर को ज्यादा पावर दिए गए, और कहीं ना कहीं थोड़ा एमएलए को भी पावर देने की इन्होंने कोशिश की है इसके अंदर। और एक्ट को बनाया, हम एक्ट बनाए हैं करके इन्होंने हाईकोर्ट में जाकर एक पिटीशन डाले थे, लेकिन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 6 महीने के पहले ही आप लोगों को कुछ भी करना है तो करना है। अगर हमारा टर्म 2020 सितंबर में खत्म हो रहा है, उससे 6 महीने पहले आप लोग नया एक्ट बनाएंगे या डिलिमिटेशन करेंगे, कुछ भी करना है, यू कैन डू इट, यू हैव द राइट्स। पोस्ट द कंप्लीशन ऑफ द टर्म दे कैन डू। तो इस तरह का जो हमारा आर्ग्यूमेंट के हिसाब से एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, we won the case in the High Court. So at the same time, government, they went to Supreme Court for a stay, and they got a stay. But unlucky ये हो गया कि then suddenly कोविड शुरू हो गया 2021 में, तो it was lying in the court, so courts were not functional and कुछ हो नहीं पा रहा था। तो समझो 2021 ऐसे ही निकल गया। 2021 का एंड में जैसे ही कोविड खत्म हुआ, मैं समझता हूँ मे बी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, एवरी टाइम हमारा लिस्ट नहीं हो रहा था, लिस्टिंग है सुप्रीम कोर्ट में, लिस्ट नहीं हो रहा था, तो हमने इंटरवेन किया, चीफ जस्टिस से इंटरवेन करवाया
कि इट्स एन इलेक्शन मैटर, इट हैज टू बी हर्ड, इट हैज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। और इसमें मध्य प्रदेश का भी कोई ऑर्डर नहीं, वो बाद में तब समझो, आई एम टॉकिंग अबाउट 2021 अक्टूबर नवंबर। तो चीफ जस्टिस इंटरवेन करके कहा कि फ्रॉम टुडे 4 वीक्स आफ्टरवर्ड्स, 4 वीक के बाद दिस शुड बी हर्ड एंड डिस्पोज्ड ऑफ करके सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस इन्होंने एक राइटिंग में दिया था। तो वी थॉट इट विल बी डन। सो उसके बावजूद भी वो लिस्ट नहीं हो रहा था। समवेयर इट इज ड्रैगिंग ऑन, पता नहीं, मैं समझता हूँ political motive to have the election. Yes, it is 100% political motivated by the so-called BJP government here and the BJP government in the center. But why was BJP government getting afraid to conduct the BBMP election when it was the Congress and the JDS which was ruling in the BBMP before the term got ended? And then No. Last year they got power. No? So they shifted, the government changed. The new our MLAs went to BJP, and the last year of the BBMP was ruled by BJP. Achha, how many last Whereas six? One year. The last mayor was a BJP mayor. Where I was the opposition leader in the BBMP. So it went on like this. So in other parts of the country, जैसे कि Maharashtra, there was same election was delayed due to political motivation. So the Judge Kanvilkar and the 3-bench judge, including Voka, who was the justice of High Court. So 3-bench pita, they had told the Maharashtra government to conduct the election as early as possible without delaying it. And if you have not done any delimitation or reservation, that should not be hindrance to the elections. So उसके 10 दिन बाद मध्य प्रदेश का भी आ गया। तो मध्य प्रदेश also same thing. So all the governments, they don't want the local body to be strengthened, irrespective of the अभी मध्य प्रदेश it's also ruled by BJP, Karnataka is ruled by BJP. No, I think this the main reason why they don't want the corporate election is they don't want the power from the MLA to go. But Exactly. MLA is be ruling when you are there, MLA won't have that much say. एक चीज और दूसरी चीज आपसे BBMP में जो भी अभी 198 से 243 हुआ, क्या उससे इंसाफ हुआ है? रिजर्वेशन ठीक हुआ है क्या? बिकॉज बहुत आप सिर्फ आपके वार्ड में आपको अभी रिजर्वेशन चेंज हो गया, यू कैन कंटेस्ट, सो क्या नहीं, देखो अभी एज पर सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ओनली दे हैव इशूड द रिजर्वेशन 7 days में रिजर्वेशन करने की जो ऑर्डर किया था सुप्रीम कोर्ट, तो ऑर्डर अच्छा है और रिजर्वेशन बराबर करें, दैट इज द क्वेश्चन। नाउ the Supreme Court ordered to give the reservation within 7 days and go for the election. That's the order. तो in 7 days they in a hurry बरी इन्होंने एक रिजर्वेशन कर दिया गया। अभी बहुत से नाइंसाफी तो है इसके अंदर। अभी आरएसएस की ऑफिस में बैठ के शायद इन्होंने किया, या कोई एमएलए के ऑफिस या एमपी के ऑफिस में किया हुआ है। यूडी डिपार्टमेंट इसमें कितना बहुत शामिल है पता नहीं। यूडी दे शुड डू द रिजर्वेशन। अभी 243 जो वार्ड है उसके हिसाब से 50% रिजर्वेशन देना है लेडीज को, तो दिया गया है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, दे गॉट 50% रिजर्वेशन। लेकिन नाइंसाफी यहाँ यही हुई है, वो भी समझो नहीं, अभी रिजर्वेशन अभी समझो गांधीनगर के 7 लेडी कर दिए, पुलकेश नगर में 6 लेडीज कर दिए, अब उसी तरह शिवाजी नगर में 5 लेडीज कर दिए, चामराजपेट में भी 6 में 5 लेडीज कर दिए। तो हमारा सवाल यह है, अगर 50% लेडीज दे रहे हैं तो आपको आर नगर में 50% दो, यलहंका में 50% दो, डमनोली में 50% दो, नगर में दो, सब जगह 50%। तो यू वांट इक्वलिटी। रिजर्वेशन, यस, महिला रिजर्वेशन इज द, और कांग्रेस पार्टी इज ब्रांच है। हम कांग्रेस पार्टी ब्रॉट इन द 50% रिजर्वेशन इन द लोकल बॉडीज बाय द कांग्रेस। बीजेपी इज जस्ट ट्राइंग टू फूल अभी के जहां भी कांग्रेस के स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं वहां पे उनको खत्म करने की एक साजिश है, उन्होंने लेडीज करवा देगा। और कहीं ऐसे कॉन्स्टिट्यूंसी हैं जहां पे फॉर एग्जांपल पुलकेश नगर, जहां पे 80% 85% मुस्लिम्स आते हैं, दे आर ब्रिंगिंग BCMB। ये तो बहुत बड़ी नाइंसाफी है। और भारतीय नगर में जहां पे पूरी हमारी इख्तिदार है वहां पे BCMP ला रहे हो। तो ये डायरेक्ट आप ये एलिगेशन डाल रहे हैं कि जहां मुस्लिम नुमाइंदे थे और जो मुस्लिम नुमाइंदे जीत सकते थे उस वार्ड को इन्होंने छेड़छाड़ करके रिजर्वेशन चेंज कर दिया। तो इसके बारे में क्या आप कोर्ट को जा रहे हैं, ये स्टे लेके आ रहे हैं,
अगर अभी अब स्टे गए तो फिर दोबारा इलेक्शन लेट होने की चांस है। तो इसके बारे में अभी इनकी साजिश अब से नहीं है। 2010 में जब इलेक्शन हुआ था उस टाइम पे भी इन्होंने पूरे मुसलमान के वार्ड पॉपुलेशन जहां जहां है उन लोगों को एक वार्ड में लाके वहां पे लेडी रिजर्व कराया 2010। तब भी शायद मैं समझता हूँ 2 या 3 ही जेंट्स मुस्लिम्स को विन, जैसे कि जाकिर है, नवाब है, शकील है, दो तीन आदमी मुस्लिम लीडर्स को विन। अदरवाइज ऑल द अदर वार्ड्स वर रिजर्व फॉर लेडीज। तो उनका मनसबा ये है कि एक माइनॉरिटी जेंट्स आगे ना आए। जब वापस 2015 में हमारी गवर्नमेंट थी थोड़े बहुत रिजर्वेशन चेंज हुए। अभी वापस 2000 अभी इन लोगों को रिजर्वेशन किया गया है, जहां जहां पॉपुलेशन माइनॉरिटीज के वहां पे लेडी रखा गया है, या जेंट्स भी ना लड़े लेडीज भी ना लड़े, बीसीएम भी करवाया गया है। डेफिनेटली कांग्रेस पार्टी इसके बारे में अभी एक प्रोटेस्ट भी हुआ है, कल प्रोटेस्ट भी किया और अश्वत्थ नारायण ने उसको कंडेम भी किया है, सीएम भी कंडेम किया है कि दिस नॉट इट्स जंगल राज बाय कांग्रेस, दे शुड हैव डन दिस एंड दिस कांग्रेस हु हैज शोन हाउ टू डू रिजर्वेशन। कांग्रेस के जो पहले आप जो कर रहे थे वी हैव फॉलोड द सेम रिजर्वेशन पैटर्न बोल के एलिगेशन आती है। देखिए रिजर्वेशन करने से पहले आपको एक गाइडलाइंस लाना चाहिए और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। गवर्नमेंट शुड इशू गाइडलाइंस हाउ द रिजर्वेशन बी डन एंड ऑन व्हाट बेसिस। SC/ST पॉपुलेशन क्या है? नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट 2011 पॉपुलेशन, नॉट 2022। 2011 में जैसे यहाँ पे ST थी वहां पे SC थी। अभी दे शुड गिव एग्जैक्ट फिगर्स दैट शुड हैव बीन डिस्कस्ड ऑन द टेबल। विदाउट डिस्कसिंग, विदाउट इशूइंग गाइडलाइंस, आपने आपके हिसाब से आपके फॉलोअर्स को खुश करने के हिसाब से रिजर्वेशन किया गया। 50% लेडीज दिया है, लेकिन सामाजिक न्याय इल्ला जिसे बोलते हैं वो नहीं है। 50% जेंट्स कितने आते हैं, उसमें माइनॉरिटीज कितने आते हैं, OBC कितने? देखिए अभी एक तो 50% रिजर्वेशन आप देखेंगे तो SC/ST का अभी इन्होंने खाली 13% दिया है, और मैं समझता हूँ BCM OBC का जो दे हैव गिवन अबाउट 33%, 34%. Actually, in general, 243 में they have given 130 seats for general. That is more than 50%. 50% of 243 is almost 122. 122. So they have 8 seats they have given more for general. Those 8 seats could have been given to the OBC. So एक तो OBC को भी इन्होंने नुकसान पहुंचाया है, माइनॉरिटीज को भी नुकसान पहुंचाया है। अच्छा, नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन सी देखेंगे अभी पार्टीज हाईकमांड हमारी जो डिसीजन जो लेती है वही हमारा डिसीजन रहेगा। आई थिंक वी में अभी फाइनल 7 डे ऑब्जेक्शन के बाद इफ दे डोंट लिसन टू अस दे वी अगेन हैव टू गो टू कोर्ट। सो अभी फिर कोर्ट में गए तो फिर एडवांटेज गवर्नमेंट हो जाएगा। तो अभी एज इज सच सी आई डोंट नो कोर्ट विल एक्सेप्ट और नॉट। वी हैव टू चेक द लीगैलिटी। जहां तक मैं मेरी नॉलेज है, यू कैन गो टू द कोर्ट। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गो टू कोर्ट फॉर द ठीक। अक्सर जब भी BBMP इलेक्शन आता है तो मेन मसले ये होते हैं कि रोड, फुटपाथ, ड्रेनेज सिस्टम और वेंडर्स। अक्सर कोई भी गवर्नमेंट, हम पिछले 30 साल से देख रहे हैं बेंगलुरु की हालत वहीं की वहीं है। और अच्छा बजट आने के बावजूद, और आप भी लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे और अच्छा काम भी किए, आपकी वार्ड बहुत अच्छी है, मैं देखा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे सामने हैं। तो क्यों बार बार जब भी एक थोड़ा आधे घंटे का बारिश पड़ता है तो क्यों फ्लड होता है, क्यों पॉट होल्स होते हैं, क्यों ड्रेनेज सिस्टम होता है? वही देयर इज नॉट अ सिस्टम वेयर यू कैन करेक्ट सिस्टम। अभी स्मार्ट सिटी भी होगी है, तो ये प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? कौन सी भी गवर्नमेंट हो, चाहे आपकी जनता दल हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये सेम प्रॉब्लम है एंड द सफरर्स आर द पब्लिक, और इट्स आवर टैक्स पेयर्स मनी व्हिच हैज नॉट बीन यूटिलाइज्ड। सो व्हाट हैव यू टू से अबाउट दैट? See, basically, old Bangalore is not planned city. It is being, developed as and when it is developed. If you say the BDA developed layouts, if you can see Jayanagar, JP Nagar, or even HBR to some extent, these areas are being developed because the roads are wide and the bigger drainage system and everything. Whereas other places has been developed by किसी ने हमारे if you come to my ward, it's very small lanes. Some Venksamappa layout, some Sitappa layout, he's developed one layout, some XYZ layout has been developed.
तो वहां पे क्या होता है, जब जब लेवल डेवलप हुआ है, इन्होंने छोटे छोटे साइट बना दिए, छोटे छोटे रोड बना दिए, छोटे ड्रेन बना के, नाउ द पीपल इज सफरिंग। एंड द मेजर जो बड़ी मोहरी जैसे कहते हैं स्टार वाटर ड्रेन, दैट इज बीन नॉट एट लिंक्ड प्रॉपर. It is still a lot of, I think maybe about 30-40 kilometers of work is pending. So which needs a lot of amount. The government should have thought of it. Siddaramaiah government में बहुत सा काम हुआ. Frankly saying, I'm just, it's not that I'm a congressman, but Siddaramaiah gave a lot of money to Bangalore for the development. But still there are potholes. Potholes is a part of, see, what happens, the quality of the work should be checked. Yeah, checked. And if you due to heavy rains, definitely potholes will exist. That is why I think they are now going for white topping, and some places they're going smart city roads, which has been pothole free. But if the quality of the roads being checked by the local engineers properly, the politician should not be blamed. But all the politicians are not educated. All the politicians won't know the thickness and the politician should be honest also. Honest. Politician should be honest. Without honesty of the politician, you cannot do any wrong. Politician should be honest to the core, to the public. He should be answering to the public, available to the public anytime. But at the end of the day, work execution is done by the engineers. This is where our problem lies. आज वो जेई रहेगा, कल चला जाएगा. And the 5 years, the corporator or the MLA is to be blamed. Of course, the corporator and MLA work also is required to check the quality. तो ठीक से कर रहा है, नहीं कर रहा है. But due to this traffic and heavy traffic. You just mentioned that last 1 year the BJP was in the BBMP. So how do you see their performance in that 1 year? And there are some allegations also. No, see, last 2 years nobody is there. This last the September to up to now August, September, 2 years it has been ruled by the government, BJP government, run by the so-called officials, IS officers, administrator, commissioner. It's an open secret. It's a 40% corruption government. It's a 40% corruption corporation. Previous to that, 5 years, 4 years ruled by the Congress. No, I am getting the percentage was less. No, it's no percentage. See, nobody blamed. See, here the contractor, president himself is written the letter to the Prime Minister of India. Yes. During our government, nobody is blamed. And their government our government, nobody went in suicide. In their government, that fellow who is from Shivamogga, he committed suicide, openly criticized the minister. Yeah, openly they say the 40% government. See, there's a lot of difference between that government to our government. The public knows about it. Public gives answer in the future. So that 1 year, what have you got? This from past 2 years, what's the development in Bangalore? Because we have seen so much smart cities coming out. We have seen Brigade Road, we have seen Infantry Road, we have seen most of the areas, and in metro also coming. Do you think the government has justified itself in smart city, or they have done some good work? I am not as a congressman. I am saying, if you ask me as a common layman, past 2.5 years, 3 years, Bangalore not seen any development. No new projects has been announced by the so-called CMs. Nor Yediyurappa, nor Bommai. You show me one big achievement of their government. Whatever is carrying forward, whether it is smart city, whether it is others, stormwater drain work, other flyovers, whatever, it has all been done during our government only. So that's what I said. Siddaramaiah is the one who gave a lot of funds to the government. Immediately that time when George was the minister, he gave 10,000 crores. Not a small amount. That is where Bangalore developed a lot. I think a lot of funds is carried forward till now. These 2 years, though, you can't see even a single development from their part. Even during the COVID time also, they have utterly flopped. Now with, the election will be announced very shortly if nobody goes to the court. Where do Congress stand? We have a good chance. See, the public are with us. लोग हमारे साथ हैं. तो लगता है कि irrespective of the ward reservations. If the reservation, if I don't get a seat, somebody else will get a seat. If they don't get, I think you should get a seat. But the public, I'm just saying, example. Anybody who is congressman or Congress affiliated man from our party, the public, I think, is showing some interest towards Congress. No. It's the best example you saw in the Siddaramaiah that day. It's a huge crowd following in Government. No, but see, you have done such a hard work from past 5 years. You have developed a constituency, you have nursed a constituency,
Now you are not going to contest. I mean, according to the reservation, you want to contest. Where is Mr. Wajid going to go? Let's see. Let this be final. I may opt for a next general, wherever there is a general ward, or my wife was a carpenter before, she will contest. So, but do you think that if nobody goes to the court and if the reservation is there and the leadership will finish? So what is the next course of action would you be taking to build leaders? They're like you be a popular leader. You can stand from anywhere in India, not only your constituency. So उसके बारे में क्या सोचे आप? No, see, basically BJP doesn't want the new leaders to come, nor I think many of the MLAs. The second line leaders should be developed. If you ask in general as a congressman, we should push more and more. If this, just imagine if the election had happened 2 years back, already 2 years would have been done for the new corporator. You would have seen new 243 faces, where Bangalore can see about in that even 5-6 persons also if they develop to the stature of the MLA who is working for the public. It'd be good, no? It's always a fight. One more complaint from the general public is that most of the corporators don't speak in the council. Most of the husbands who keep their wives as the candidate, they work, and work has been done by the officials and IAS officers and all, and ultimately the people are suffering because no work, no development takes place, and they don't know who. If I don't get a seat, my wife will contest. And then you'll remote control your wife. I don't remote control my wife. See, it's a lot of difference. She is not part of any activity. There's no day-to-day activity in the party, no day-to-day activity in the council. There are people, there are ladies who are really actively participating, but there are few ladies who don't come out, they don't work. But at that time, in the area, official work the corporate only do. Unofficial work, whatever has to be taken care, organizing and getting the work execution, definitely there. Or is there, if now you mean to say all the MLAs are doing the work? MLAs PS are doing the work. It's not the MLA who's going to stand there and do the job, right? So somewhere some MLAs are handling with their PAs and their local leaders. So definitely there's nothing wrong in a husband working for the wife. You would call it the PA, nothing wrong. What's the message last? Message, the election should be conducted as per the constitution amendment. It is a mandatory because the general public will definitely require a local representative. It is that the common man cannot approach the MLA. Common man cannot, and MLA, though they are good, they cannot be approaching to all the voters, all the voters. Each MLA has got 8 to 7 corporators. They will look at day-to-day activity, civic activity, that is more important. And sometimes the need of the hour, what we saw in the COVID time, the corporators were there with the public, supporting them in small issues like getting the oxygen done and putting them in the hospital and helping them and all that. So my message is that election should be held on time and the public should be benefited. Very nice speaking to Mr. Wajid. Mr. Wajid was the view that the election should be held on time, and even though he is unhappy with the reservation, he's saying he'll go for it, and he's told that anybody whose wife contests, the husband would never be remote control, he will only be assisting as a secretary. And with so much experience of being a leader of opposition, we have to see that with whoever gets elected in the next BBMP election, they do something good for our Bangalore city. That is Rizwan Hassan signing off for National News.